हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन जीनर वोल्टेज। सो टू सी कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, सो हाउ डज इट इफेक्ट जीनर वोल्टेज, तो उसके लिए वी हैव अ पैरामीटर व्हिच इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज डेल्टा वीजेड बाय वीजेड डिवाइड बाय T1 minus T0 into 100% per degree Celsius. Now delta Vz is the change in the zener voltage. Vz is the zener voltage at 25 degrees Celsius, which is the room temperature. T1 is the new temperature and T0 is the room temperature, which is 25 degrees Celsius. Now let us have a look at a numerical. So this is the question, that is calculate the change in zener voltage if the zener voltage is 10 volts at 25 degrees Celsius and the new temperature is 100 degrees Celsius and the temperature coefficient is 0.072. So delta Vz तो हमें निकालना है। We know that the value of Vz is equal to 10 volts. T1 जो कि हमारा न्यू टेम्परेचर होता है that is 100 डिग्री सेल्सियस and T0 is equal to 25 डिग्री सेल्सियस and Tc की हमारे पास वैल्यू है ही that is 0.072. तो एज सच डायरेक्टली हमें ये सारी वैल्यूज हमारे फॉर्मूले में पुट कर देनी है and on further solving we will have the value of delta Vz as 0.54 volts. तो यहां से हम लोग न्यू जीनर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, which is going to be equal to Vz plus delta Vz. So that is going to be equal to 10 plus 0.54 volt, which is equal to 10.54 volts. And from this we can say that with increase in temperature, हमारा zener potential भी increase करता है. So that was all for this video and I will see you in the next one.